Hello everyone, welcome back to my channel, Sridevi's Commerce and Management Academy. So far, we have seen the cash flow statement, the concept आपने देखा. Also, you saw that it has got so many activities which we have to cover, namely operating, investing, financing, as well as cash and cash equivalents. तो इसके बारे में हमने समझ तो ले लिया, फॉर्मेट को भी कुछ हद तक सीख लिया. But the fact is, unless until we practice, we will not be able to fully understand. And that's why what I've done is मैं आपको ये complete format उस दिन हमने सिखाया, लेकिन हम आपको लेके only I'm going to take today all about net profit before tax and extraordinary items. तो आप देख लीजिए कि क्या क्या आइटम्स आते हैं यहाँ पर. टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले कितना अमाउंट आता है. सो व्हाट वी टू डू, पहले आपको नेट प्रॉफिट कितना पता करना पड़ेगा. ओके, एंड दैट इज प्रीवियस ईयर, पिछले साल कुछ अमाउंट था, मान लो कि 6 लाख था. इस ईयर करंट ईयर में इफ इट इज 8 lakhs, which means now 2 लाख बढ़ गया, 2 lakhs increase, right? So when that happens, that is a surplus. Sometimes it can happen that last year it was 8 lakhs and this year it is 5 lakhs, which means 3 lakhs kam ho gaya. Then it can be minus. Whatever it is, the difference is between the current year and the previous year. That amount you need to write in the outer column. Okay? And then we need to add back. जो भी आपने उसको निकाल दिया है, उसमें से निकाला है प्रॉफिट से, तो आपको उसको add back करना है. क्या करना है? टिप, TIPP. I have explained to you the other time. Also, what do you mean by tip? Transfer to general reserve अगर है तो वो amount को add back कर दो. If you have interim dividend, add back. If you have proposed dividend, add back. And also, if you have provision for tax, add back. So these 4 items, once you add, you will get net profit before tax and extraordinary items. Now, when we say extraordinary items, there can be some extraordinary items also. Okay, we'll cover that in the next session. So today, let us see how to solve a problem. Now, again coming back to this, how do you start cash flow statement of the company's name as per accounting standard 3, which is revised. तो particulars, details, amount rupees लिखेंगे. So first it starts with A, cash flow from operating activities आपको फाइंड आउट करना है. उसमें starting what you are going to do, we have to find net profit before tax and extraordinary items. So we are going to take the net profit adding TIPP. Okay, so let us take now a problem. अभी हम प्रॉब्लम करते हैं. Now see, from the following extract of balance sheet of Universal Limited, calculate the net profit before tax and extraordinary items. And they have given you in the balance sheet equity share capital, which is, you can see this is 2023 and this is 2022, which means this is the previous year and this is the current year. ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, पिछले साल 10 lakhs थे, उसके बाद इस साल भी 10 lakhs है, which means they have not redeemed, they have not issued, कुछ नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट they have given 10% preference share capital which was 10 lakhs before and now it is 10 lakhs. लेकिन ये जो चीज दिख रहा है ना 10%, it is indicating that you need to calculate उसका जो भी 10% आता है, that is called dividend. Okay, so वो हम करेंगे. Anyway, surplus कितना बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, that is पहले 10 lakhs था, अभी 15 lakhs है. तो आप देख सकते हैं कि हम लोग शुरू कैसे करते हैं नेट प्रॉफिट में. We have to see what is the, you remember the our first item is net profit surplus current year minus previous year. Accordingly, हमने यहाँ पर क्या किया है, current year minus previous year, and what is the current year here? It is 15 lakhs minus 10 lakhs. So how much are you getting? You are getting 5 lakhs. उसके बाद आपको क्या करना है, as per our format, we have to see whether we have general reserve. एड ट्रांसफर वाला है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है तो लिखो, इंटरिम डिविडेंड है तो लिखो, जो कि
एडिशनल पॉइंट में दिया जाता है. Proposed dividend always to be calculated on the always to be taken which year? Previous year में, and provision for tax current year. Okay, so we have to check now in the question. So what they've given is, okay, please check whether you have in the balance sheet यहाँ पर reserves and surplus दिया है क्या? reserves दिया है, general reserve something not given, right? So आपका ये item नहीं है, it is not there. Okay, next is interim dividend, proposed dividend and provision for tax. इसकी जो है ये जो tip जो है, you can put this in any order, no problem. जैसे क्वेश्चन में देते हैं वैसे कर सकते हैं. So accordingly, you can see that in the adjustment, we should start with the adjustment. This is the additional information जिसको हम adjustment भी कह सकते हैं. So here they have given interim dividend of rupees 2 lakhs was paid on equity shares on 1st November. तो interim dividend पे किया है और according to our format interim dividend additional point में दिया होगा तो we have to add back. Accordingly, I have taken here 2 lakhs which is given here. So we have taken 2 lakhs. Okay, fine. इसके बाद now what else do we have? PIPP, proposed dividend provisions. Have they given here any provisions? कुछ भी नहीं दिया है. Okay, proposed dividend दिया है क्या? वो भी नहीं दिख रहा है. So now we only have what? Dividend. Yes, 10% in dividend दिया है प्रेफरेंस शेयर को, तो दैट वी हैव टू राइट. एंड किसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं? प्लीज रिमेंबर, whenever don't be confused. यहाँ पर अभी ठीक है 10 लाख एंड 10 लाख दिया है. sometimes they will give you your 12 lakhs. You have to take into account the previous year. So on previous year में आपको करना है. So 10 lakhs के ऊपर 10%, so it comes to 1 lakh. And so you got your net profit before tax and extraordinary items. Very easy it is. Net profit plus transfer to general reserve. Okay. Then we have interim dividend I. Then we have P, proposed dividend, provision for tax. तो वो सारे हमने कवर कर दिया and accordingly we have solved. Let us take the question number 2. Very simple again. ये आपको extract दिया है balance sheet का. Again, you can see here 10%. किसके ऊपर निकालेंगे आप 10% proposed dividend में? प्रेफरेंस शेयर का on the previous year. Okay. ये आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है. 4 lakhs था पहले एंड अभी जो है 7,20,000 है. सो व्हाट इज द सरप्लस दैट यू हैव? इट इज 720 minus 4 which means 3,20,000 है नेट प्रॉफिट शुरुआत. Then it is unpaid dividend, इसको तो हमें कुछ नहीं करना है. What is the rule for, what is the, how do we calculate? Very simple. See, net profit, how did you get 3,20,000? That is current year minus previous year, which is 7,20,000 minus 4 lakhs हमने कर लिया. Accordingly, we got this amount, that is 3,20,000. Add ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया है? नहीं है. सो इट्स ओके. देन वी हैव आई, इंटरिम है, प्रपोज्ड है, प्रोविजन है. सो लेट अस सी नाउ प्रपोज्ड डिविडेंड वी हैव. नाउ वेयर इज द प्रपोज्ड डिविडेंड? दे हैव गिवन यू इन द एडजस्टमेंट, इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन. प्लीज रिमेंबर, प्रपोज्ड डिविडेंड इज ऑलवेज टेकन ऑफ व्हाट? व्हिच ईयर? प्रीवियस ईयर. तो वो लोग करंट ईयर दिया है एंड प्रीवियस ईयर. 1,60,000 is the previous year and this is the current year. तो 1,60,000 जो है आपको लेना है and that is why you are taken 1,60,000. Then you know that कि और एक डिविडेंड आ रहा है प्रेफरेंस शेयर का जो दिया है. So 10% on 6 lakhs is 60,000. That also you have taken. डिविडेंड हो गया. T नहीं है. I interim है. Yes, they have given interim dividend 40,000 दिया है. So 40,000 interim dividend दिया है. That also you taken. और कुछ है क्या? जनरल रिजर्व नहीं दिया है. इंटरिम डिविडेंड दिया हमने लिखा है. प्रपोज डिविडेंड दिया हमने लिखा है. एंड प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं भी नहीं दिख रहा है. So it's over. And accordingly 3,20,000 में आपको 1,60,000 plus 60 plus 40 करेंगे तो
you are getting 5,80,000 which is net profit before tax and extraordinary items. बहुत ही easy है. What is required is you need to practice. That is important. Okay. Let us now take a little bigger problem and which is very easy again. So what they're asking, we have to calculate net profit before tax and extraordinary items. Okay. So you're going to start with, तो आपको पता है कि क्या करना है. नेट प्रॉफिट क्या होता है? सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. तो हम वैसे करेंगे. वी विल डू दैट. सो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट? सो हाउ डू यू राइट कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ शिवा लिमिटेड? हियर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? शिवा लिमिटेड एज पर accounting standard 3 revised. A, cash flow from operating activities, net profit surplus. So you know your net profit surplus कितना है? 1,45,000 पहले था, अभी 25,000. So you will be subtracting that. General reserve अगर है तो देखो, interim dividend, proposed dividend and provision for tax. When you add all those things, now let us see the question. Very simple. Net profit it is 55. How did you get 55? 2 lakhs minus 1,45,000. 2 lakh माइनस 1,45,000. इसको हमने ये जो करंट ईयर है ये प्रीवियस ईयर इसको माइनस करके मिल गया. एंड देन व्हाट यू हैव, दे हैव गिवन, नाउ यू सी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. इट इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन. इट इज नॉट एट ऑल देयर. कहीं भी नहीं दिया है. जनरल रिजर्व नहीं दिया है. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैव दे गिवन? दे हैव गिवन द इंटरिम डिविडेंड. अगर TIPP, नो TI अगर है इंटरिम डिविडेंड, सॉरी या interim dividend is they have given 10,000. You can see the question, where is interim dividend? Very simple, it is there in the adjustment. Interim dividend paid 10,000. Proposed dividend किसका लेंगे आप? Proposed dividend you will take of the previous year, that is 50,000. So proposed dividend and interim dividend you got it. So you have put the proposed dividend, okay, proposed dividend and interim dividend and net profit. Now next one more is our provision for tax which has to be taken of the current year. Provision for tax, okay, short term provisions which is under that they have given provision for tax, and this is the current year and this is the previous year. You have to take the current year. Accordingly आपने 50,000 ले लिया, इन सबको ऐड कर दिया, एंड देन यू गॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. काफी सिंपल था, काफी सिंपल है. अगेन, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर अप सो दैट यू विल बी एबल टू नो विद दिस व्हेन वी ऐड नॉन कैश आइटम्स, इन सब चीजों को ऐड या माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस उसको भी लेंगे, एंड देन वी विल फाइंड how to calculate the net cash flow in the operating activities. So यहाँ तक first if you have understood, now we can do in the next video the other few things. Very simple. So this is what I wanted you all to know, and I believe that बहुत ही simple था, बहुत ही simple था इसकी जो calculations, and I want you to practice this again. Very easy. Please remember this format. ये काफी easy है and you'll be able to do any problem. Okay, that's all for today. Kafi chota, I did not take too much of time because I know that it's very easy and we can move on fast. So what's important again, that this video will give you a very clear concrete आपको concept समझ में आएगा, and I'm picking up just few problems based on what is required for you. So please, if in case you like my video, you feel it's really helpful to you and your friends, you can subscribe my channel, you can share that to your friends and all, and I look forward to your support. So that's all for the day. Thank you so much. Thank you for watching, and I hope that ये concept आपको clear हो गया. In my next video, we will cover up the other few items. नॉन कैश आइटम्स लेना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल के बारे में समझना पड़ता है. काफी इजी है, वेरी इजी एक्चुअली. व्हाट टू ऐड, इनफ्लो को ऐड कर दो, आउटफ्लो को माइनस कर दो, उतना ही है. दैट्स ऑल. एंड देन वील फाइंड द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो है कैश फ्लो कितना है पता चलेगा.
अगर पॉजिटिव है तो हम उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं. इफ इट इज नेगेटिव बैलेंस एंड वी से कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. वो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. गॉड ब्लेस एवरीवन. थैंक यू.